Assalamualaikum dear students, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू पोएम ऑल द वर्ल्ड आ स्टेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, दुनिया एक स्टेज है, दुनिया एक ड्रामे की जगह है। विलियम शेक्सपियर is a great artist of 16th century. His study of human nature is comprehensive and striking. He has keen observation of human nature. He has studied human nature very objectively. He exposes the flaws of men, women, shortcomings, drawbacks of human nature. He discusses in this poem a role of man. He says, in this world, man performs various roles of his life, but according to William Shakespeare, man performs 7 roles in his life. So in this way, he discusses in this poem the 7 stages of life. He says, a man comes in this world, he performs his duty, he performs his 7 roles in his life, and after performing his role, he has to leave this world. So William Shakespeare discusses in this poem 7 stages of life. First of all, a first stage of life. A first stage of life. A child. William Shakespeare says, first of all, man, when he comes in this world, he becomes a child. He becomes a baby. He cries in the hands of his nurse. He has no sense, but he is crying. He cries for milk. He cries for food, but he has no sense. Due to lack of no sense, he only cries. When he is crying in the hands of the nurse, he vomits in the hands of his nurse, and he is a child. Just he is only crying and vomits in the hands of his nurse, and that is the first stage of life. After it, William Shakespeare says, the second stage of life. Second stage. School boy. He becomes a school boy. He wears a bag around his shoulder. He goes to school, but he is not willing to go to school because he has shifted to his second stage of life. That is early stage of life. So that is why he is not ready to go to school. But his parents compel him to go to first school. He goes to school, but unwilling. This is the second stage of life. And now we discuss the third stage of life. He becomes a youngster. He becomes a lover. He plays the part of a lover. In this way, he has various desires in his mind. He becomes ambitious. He has various dreams in his mind, and he weeps like a snail. He is creeping like a snail. He has various wishes, desires, dreams in his mind, and he tries
to fulfill his desires from that stage of life. Now discuss the fourth stage of life. Fourth stage of life. He becomes a soldier. In the fourth stage of life, he becomes a soldier. He does not ready to feed anybody, any problem. He is not ready to accept who disturbs him and who disturbs his grace. He hankers after wealth, and he is not ready to accept any mistake. And when he becomes a soldier, and he is ready to accept any part of money, he has buried on mouth. He becomes a almoter. He's buried like a part. He is not ready to reject anything. He tries to convince himself by wealth. He's trying to accept any proposal of bribe. He takes bribe and he becomes a soldier. And this is the fourth stage of life. Now we discuss the fifth stage of life. Fifth stage of life. In the fifth stage of life, dear students, man becomes a justice. He becomes a judge. His mind is going to cool down. He feels the relaxation in his mind. He becomes a genius, but he is a jealous from others. He does not ready to accept any outsider proposal of life. He becomes a authentic person. He feels in himself. He is speaking everything is good and bad. He thinks in his mind what he is speaking and what he is saying. All these things are correct according to the sense of the fifth stage of life. Because justice demands justice. He says in his mind, he speaks everything in truthful. ये कहता है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, और ये अपने आप को यकीनी मानों में सच्चा साबित करता है। ये चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो गलत है, जो कुछ ये बोल रहा है ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इसलिए ये अपने आप को सच साबित करता है कि मैं लोगों में इंसाफ, मैं जानता हूँ कि गलत क्या है, सही क्या है, गलती कहाँ पे हो रही है, सच कहाँ बोला जा रहा है। फिफ्थ स्टेज के अंदर जब ये जस्टिस बनता है तो ये इंसाफ करने वाला बन जाता है। ये स्टूडेंट ये चीज की फिफ्थ स्टेज होता है। नाउ वी डिस्कस द सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ। In the sixth stage of life, he becomes an old man. He becomes an old man. He is weakened. His body, his physique is going to disturbance due to lack of physical fitness. He becomes thin personality. His clothes are going to white, and even his shoes are so wide and for his feet. He feels in his mind he becomes an old person, and all these parts of his body are going to disturb, because in his old age man does not has a good power. So that's why in the sixth stage of life he becomes an old person. And when he speaks,
in front of any someone, his voice whistles. इसकी आवाज़ों में सीढ़ियाँ बजती हैं, जब ये बोलता है तो सीढ़ियाँ बजती हैं, विसल बजती हैं। यानी इसके जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले हो चुके हैं, जो जूते पहनता है वो भी बिल्कुल खुले हो चुके हैं, अपने आप में ही जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर है। इसलिए 6th स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर बताया जाता है, विलियम शेक्सपियर बताता है कि इंसान जो बिल्कुल बूढ़ा होता है। नाउ वी डिस्कस द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, इज कॉल्ड अ 7th स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ second childish. In the 7th stage of life, man becomes again a child. He has no power of speaking. He has no taste in his mouth. He has no speaking power. Everything is going to disturb. He is without teeth. He is without taste, he is without eyes, his eyes are going to disturb, even all the parts of his body are going to weaken. Man feels he is so weak, that is called a second childish. He becomes a child. आखिरी स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर ये जो बंदा है, इंसान है, ये अपने को यूँ महसूस करता है जैसे वो बच्चा बन चुका है। ये स्टूडेंट्स, ये थे इसके मेन पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं। ऑल ओवर द स्टेज, दुनिया एक ड्रामा है, दुनिया एक स्टेज की मिलता है। ऑल ओवर द स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, यहाँ पे जितने भी आदमी, औरतें, मर्द हज़रात आ रहे हैं दुनिया में, वो सारे अदाकार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। इस तरह वो दुनिया में आते हैं और इस तरह वो दुनिया से जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम plays many parts, एक आदमी के किरदार अदा करता है। His acts being 7 ages, जो उसके काम हैं वो 7 अतवार पर मुश्तमिल हैं। At first the infant mewing and cooking, in the nurse the arm, पहला पार्ट का ये है, ये बच्चा बन जाता है, ये अपने नर्स के हाथों में चिल्लाता है, रोता है और अपने नर्स के हाथों में वॉमिट्स, उल्टी करता है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर ये लड़का स्कूल बॉय बन जाता है। विद सैचल, ये इसने बैग पहना होता है अपने इर्द गिर्द, शोल्डर के इर्द गिर्द, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और ये फिर सुबह का सितारा बन जाता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, जैसे घूंगा। अनविलिंग टू स्कूल, जब ये स्कूल जाता है तो ना चाहते हुए जाता है। एंड देन द लवर, और ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये एक आशिक बन जाता है, मोहब्बत करने वाला बन जाता है। सन लाइक फर्नेस, ये ऐसे होता है जैसे भट्टी के अंदर से आग निकल रही हो। विद अ वॉफुल बैलेट, इसकी जो इसकी तुंद है वो बड़ी हो जाती है। मैन टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और ये महबूबा के लिए क्या है, बकता है, रोता है। देन अ सोल्जर, फिर ये सिपाही बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीबोगरीब किस्म की कसमें खाता है। एंड बेरेड लाइक अ दीपार, और अपने मुंह पर फ्रेंच कर दाढ़ी रख लेता है जैसे चीते के बाल। जेलियस इन ऑनर, सडन इन कोय, और ऐसे ही कहते हैं स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर ये क्या करता है कि ये हसद ज़िंदा बन जाता है, अपनी जिद के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं आने देता, लड़ाई झगड़े करता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की आर्जी शोहरत की खातिर। इवन इन द कैनन माउथ, हत्ता के तो के मुंह पर बैठ जाता है। एंड देन द जस्टिस, और फिर ये इंसाफ परस्त बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप्ड लीड, और उसके पेट पर जो तुंद है वो इतनी बड़ी होती है जैसे गोल मुर्गे की तरह। विद आई सेवर, इसकी आंखें खींची हुई हैं। एंड बैरड ऑफ फॉर्मल कार्टर, और छोटी इसकी दाढ़ी रखी होती है। फुल ऑफ वॉइस साज, और इसकी जो अकल की हिस्से हैं वो बिल्कुल तेज हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, जैसे जुदा दौर की मिसालें। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह ये अपना किरदार अदा करता है। The 6th age shifts into lean and slipper pantaloon, जो 6th स्टेज ऑफ लाइफ है, कहता वो तब्दील हो जाती है ढीले ढाले पैंतलून के अंदर। With spectacles on the nose, इसकी आंखों पर ऐनक आ जाती है। एंड पाउच ऑन साइड, और इसने इनके देख बैग पहना होता है। His youthful hose well saved, इसके नौजवानी के जो कपड़े हैं जो महफूज किए होते हैं, अवन टू वाइड, वो इसको दुनिया के अंदर बहुत खुले हो जाते हैं। For shrunk shank,
वो इसका जिस्म सिकुड़ जाता है। एंड बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मर्दाना आवाज होती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रैवल पाइप्स, और जो लगता है जैसे ये दूसरे बचपन के अंदर शामिल हो चुका है। तीखी इसकी आवाज से निकल रही होती हैं। एंड विसल्स इन साउंड, इसकी आवाज में सीटियां बज रही होती हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंट फॉर हिस्ट्री, यहां तक ये जीवो की किस्म की दुनिया खत्म होने जा रही है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ओब्लिवियन, सिर्फ आखिरी बचपन है। जैसे लगता है जैसे आखिरी स्टेज के अंदर बताता है कि ये जो स्टेज है ये सेकंड चाइल्डिश में तब्दील हो जाती है, भूलपन का शिकार है। सेंस टीथ, दांतों के बगैर, सेंस आइज, आंखों के बगैर, सेंस टीथ, टेस्ट जैके के बगैर, सेंस एवरीथिंग, हर एक चीज खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द